So we were solving nonlinear PD using Charpit's method, and then we have studied two special cases in which you can use those auxiliary equations. First one was equations involving only derivatives P and Q, not directly X, Y, and U. In that case, from auxiliary equation, you got either P constant or Q constant. So by fitting in given equation, you can solve for P or Q. So if you have used dp 0, then you got P constant. So then you got Q in term of A. In second case, your equation has only dependent variable U and derivative. So not X and Y. These are independent variable. So in that case, from last two equations, it comes out that P equal to some constant times Q, or you can say Q equals to some constant time P. So by fitting value of P or Q, you can solve for other variable from given equation. Then solution is given by integrating du equal to P dx plus Q dy. I hope you solve this integral. What is the answer of this integral? 1 by on integrating 1 by 2a au minus log equals to uh, I hope everyone got this complete integral containing two arbitrary constants. Next case is so these are known as separable equations. This means you can separate the variables in this form. So x and derivative with respect to x, one side, and y and derivative of u with respect to y in other side. So this is the PD in which u is absent. In which you can say directly u is absent. And the term containing x and p can be separated from term containing y and q. For these type of equations, you have Charpit equations. So what you got dx by, what will be here? Or if you want to write in that notation, uh, capital F. So you need to write these uh, two on one side. So this is my capital F. So dx by ये आएगा ओके ठीक है तो p सिर्फ फर्स्ट में ही है स्मॉल में सो व्हाट यू गॉट dx by fp then dy फर्स्ट में y एब्सेंट है सो y is here GQ. only so what you got minus gq
देन डी यू, फर्स्ट को पी से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को क्यू से, देन डी पी, डी पी minus fx and minus p times fu. So there is no u directly, so that term will fu will be 0. So dq minus GY. gy. So first three ratio are similar, but in last two ratios, so term that contains तो लास्ट derivative में of f पॉजिटिव ही with आएगा। u, that is absent. So you can take two ratios. जैसे आप देखोगे फर्स्ट डी एक्स बाई एफ पी, एक्स पर पी है, और फोर्थ में भी एक्स पर पी है, और यू कैन टेक सेकंड that contain only y and q, and last one q and y. So we have first ratio, सर हाँ जी, लास्ट में पॉजिटिव नहीं आएगा जी वाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थैंक यू. So can you integrate this equation? It's very simple form, fp dp plus fx dx equals 0. What will be integration? हम्म PX equal to constant. हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हो? ये एक जेड डेरिवेटिव बन गया, यानी कि ये चीज है. डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ एक्स। So on integrating you got f, which is a function of x and p, this is equal to constant, and from now use given equation, from given pd, from given pd fx p equal to constant, so is gy cube, both are equal, so that is also constant a. So then use, now use the relation du equal to p dxy to find complete integral. For example, find a complete integral of and sometime maybe you see in exams, so people forget everything, so both are same, okay. Don't be consistent with notations. Of course p is derivative of u with respect to x, so you can write given equation, so separate term, मिक्सअप नहीं है ना p. फर्क पता कैसे लगेगा? सारे अलग अलग है ना, p अलग है, y अलग है, 1 प्लस x, x स्क्वायर, सो देयर इज नो मिक्सअप. p वाला अलग है, y वाला अलग है, x वाला अलग है, so you can separate. But if you go in previous example, so you have a mix up p and u, so you can separate, you can write the equation in this form. So from Charpit equations you can write directly
So what you got? Left hand side or right hand side both are constant. For convenience, you can write this constant a square as p has square. So you need to solve for p. So this is ax upon under root 1 plus x square. So therefore right hand side that is also constant, same constant. अब यहाँ चेंज नहीं करना, ठीक है? अगर यहाँ ए स्क्वायर लिखा है तो यहाँ ए स्क्वायर लिखना है, अगर ए लिखा है तो फिर आपने ए लिखना है. सो बोथ साइड्स आर इक्वल. सो क्यू इज ए स्क्वायर वाई. नाउ यूज द रिलेशन du equals p dx plus q dy, and on integrating you got complete integral. So what you have, du equals so which gives after integration so this is the complete integral which contains two arbitrary constants a and b. And fourth form, which is known as Claret form or Claret's equation. So a first order PD is said to be in Claret's form if it can be written as u equals px plus qy plus a term containing any form of p and q. But here in x and y you can say ax plus by something. तो x और y में ये लाइन टाइप है, बाकी p और q whatever you have, so they can be in any form. फर्स्ट ये फैक्टर होना चाहिए, rest of the term they can contain any any form of p and q. So in that case you have Charpit equations, they can be simplified further. Charpit equations, they takes the form. So what you got, dx by, or if you want to write in capital F form, so you can write px plus qy okay, or you can write u minus, so take everything on left or right, it's your choice. So Charpit equation, they dx by derivative of this with respect to क्या आएगा डेरिवेटिव, p लिखोगे कैपिटल F का p के सेंस में, तो फर्स्ट टर्म देगा आपको x p x p का 1, फिर f p y टर्म से आएगा. सिमिलरली y प्लस f q, then du, so multiply first with the x, second with the y, p f p,
and then dp upon क्या आएगा? hmm? Say it. सर माइनस पी माइनस fx आएगा विच इज p, फिर प्लस p टाइम्स fu के सेंस में आ जाएगा, p कैंसिल होके, so you got dp upon 0 सर एफ ऑफ एक्स हैं? ठीक है सर fx आएगा ना, f ठीक ये आता है ना, so then similarly dq upon 0. 0. So this is much simpler form. So dp equals to 0, p constant, dq equals to 0, q constant. So you got p constant and q constant. So solution is, so replace p with constant and q with constant. For example, find a complete integral of p plus q if you are unable to uh, trace the form, just write usual Charpit equations, and you can check from Charpit equation itself you got these relations. Okay, so don't worry. So just if you are not able to write the form, just write Charpit equation, then you will get the same answer. So you can write this PD, बट अगर ये फैक्टर हो तो कुछ ये फॉर्म बनेगा एक्स पी प्लस वाई क्यू, और यू भी फर्स्ट में हो, ये फैक्टर अगर हो तो, अगर यहाँ पे कुछ और हो एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्सेट्रा, देन यू कैन नॉट राइट एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस 1 by p plus q. So which is Claret form? And complete integral is given by p equal to constant and q equal to constant. Hence u equals to ax plus by plus 1 by a plus b. So in that way you can solve some of the nonlinear PD by using Charpit's method. One mix-up example.
Find complete integrals of and fourth one, where P is ux and q is uy. Can you identify if these equations have some special form, which form you have in first? For example, Equations involving only P and Q. First case. p plus q minus pq, so this is my f. So what you got in that case? From Charpit's equations, you got p equals to constant. Then from given PD, fit p equal to constant and find q. Then use relation du equals to p dx plus q dy to find u. So on integrating, you got ax. So this is my complete integral. What you have in second? Or if you want to write in short notation, then you can write u equals to p square minus q square, or p square minus q square minus u equals 0. So equation involving only u, p and q. So what you got from Charpit equations? ये मिलता है ना इसमें dp by p equals dq by q. So on integrating, you got p equal to aq. So from given pd, so u equals to a square q square minus q square. Solve for q. So that is u a square minus 1. Therefore, use du equals to p dx plus q dy, और p को हमने लिखा है ए क्यू, तो ए क्यू कॉमन आ जाएगा ना, और q की वैल्यू एक बार डाल दो यहाँ पे, और
or you can write in left hand side du by square root of u. This is constant a square minus 1 a dx plus dy. On integrating, ax plus y plus b. So this is complete integral. So this is the complete integral of given equation. सर Hmm. सर हमने एक पहले भी तो पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला, जिसमें हम कहते थे कि अगर प्लस की फॉर्म में हो यू, जैसे यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, हाँ तो हाँ हम हाँ सोल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं हाँ यू हाँ, एक्स प्लस यू, वैसे भी कर सकते हैं सेकंड वाले को। वैसे भी कर सकते हो, बट वो रिस्ट्रिक्टिव है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैनी केसेस। कर सकते हो, वो भी एक ट्रिकी मेथड है दैट यू कैन अप्लाई इफ यू हैव प्रोडक्ट और सम। जैसे अगर इस केस में करना हो तो माइनस में अज्यूम करेंगे, किसमें? अगर इस क्वेश्चन में करना हो तो अज्यूम यू एक्स हो माइनस यू वाई, ऐसे अज्यूम करेंगे। हाँ, ये मतलब इंटरेक्टली तो प्लस हो रहे हैं, तो प्लस या माइनस आपको लेना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई होते तो फिर मल्टीप्लिकेशन में लगना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, प्लस करो या माइनस करो, बट उसमें हमने, लेट मी शो यू बैक, बहुत पहले लिया था हमने। लाग्रांज इक्वेशन के जस्ट बाद में किया था। ये वाला उसमें वन, ये वाला था ना? हाँ, ये वाला यस एग्जाम्पल सर। था, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन, ये वाला। और एक था, मतलब अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस ले लेना है, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस लेके देख लो आप, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई लेके देख लो आप। ठीक है, बट इनमें देखो, दोनों में एक चीज है कि और कोई मिक्सअप नहीं है ना, सिर्फ पी और क्यू ही है, या यू है आपका, कह लो यू तो है ही, और यू के डेरिवेटिव ही हैं, और कोई टर्म नहीं है एक्स वाई वाली। करना ट्राई इसको, सेकंड वाले को। इन थर्ड व्हाट यू डू, लेट मी नो द आंसर ऑफ थर्ड। You can write this p square by x square, q square upon y square, or you can write, तो सेपरेट है, सेपरेबल इक्वेशन है, so in that case you can, so what you got, जो भी लेफ्ट को एफ एक्स पी कहते हो, इसको जी वाई क्यू कहते हो, so both are comes out constant। सर वहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर नहीं आएगा? यस सर, एक मिनट, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया ना। अच्छा उल्टा लिखते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आएगा, ये करें, ये सर। वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर,
So what you got, P equals x square plus a square, so x, okay, and you got q, okay, so therefore, so du equals to p dx plus q dy. So this give you u equals to इंटीग्रल बताना फर्स्ट का क्या रहेगा. Let me know the answer. What will be the integral of first? थ्री स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बाद 3/2. X square plus ए स्क्वायर के बाद 3/2. 3 by 2 divided by 3. यस सर. Second, ये आएगा सेकंड. सर 2/3 आएगा आई थिंक मल्टीप्लाई में. या हाँ जी. सेकंड, यस सर. ये आएगा कुछ और तो प्लस माइनस साथ में 2 नहीं. ठीक है. फोर्थ पार्ट. So in your notation, if you want to write, so this is p square plus q square plus 1 minus 2u. So which form you have? Hmm? Equation P, Q and only U. u, p and q. So what you got in that case is, so equation only involving u, p and q. So what you got, p equals a times q. तो p इक्वल्स टू ए क्यू फिट कर दो गिवन इक्वेशन में. सो 1 प्लस ए स्क्र क्यू स्क्र इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र. ये भी फिर माइनस आएगा. यहाँ ये बनेगा पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इक्वल्स टू 1 प्लस 2 यू. सो सॉल्व फॉर पी और क्यू. सो
So this is Q and P equals to AQ. क्यू ये आएगा और पी आ जाएगा ए टाइम्स दिस. So use the relation du equals to p dx. So this factor will be common from both. So p a dx plus dy. So you can write du upon 1 plus 2u. Let me know the integration of left hand side on integrating. Hmm. Let me know the integration of left hand side. dx अपॉन अंडर रूट एक्स है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है. सिंपल यही रूट में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 2 अंडर रूट 1 plus 2u. Okay. So this is the complete integral. Okay, so this is the that's it in Charpit method. सर साथ में 4 नहीं आएगा मल्टीप्लाई में? 1 by देख लो कैंसिल हो जाएगा, मेरा तो 2 का आएगा. नहीं सर, इसका डेरिवेटिव करके देखो, बन रहा है ऊपर। 2u है ना, तो हाँ 2 कैंसिल हो जाएगा. One more transformation that we will study tomorrow. That transformation also says that you can convert some of the nonlinear PD into linear one. And then we will move to second order PD. Any query? And let me check who is sitting here. Anshika, Yes, sir. Arushi, Yes, sir. Bhumika, यस सर। Jasmine, Yes, sir. Khushika, Yes, sir. Komal, यस सर। Nidhi, Yes, sir. Prab, Jyot, Yes, sir. Shubham Garg. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, that's it. So we will continue tomorrow. Bye for today. Okay, sir. और चारपिट में give a try to solve 2, 3, 4 problems. लेक्चर नोट्स में अपडेट कर दूंगा, उसमें एंड में एक्सरसाइजेज हैं, यू नीड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे करते हैं ना? हाँ कर देंगे. एंड वंस यू सॉल्व प्रॉब्लम यू विल नेवर फॉरगेट दिस मेथड. बट अगर आपने ट्राई नहीं किया देन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज फॉर्म्स. ओके.